I used to wear all size. There is a store of pantaloons का एक brand है, all करके. All All का full right. form है, a little larger. तो उसके मैं size 5, size 6 हुडीज पहनता था मैं. While I was getting on the horse again, मेरा जो पैंट था ना जो मैं पहन के गया था वो घुटने से लेके मेरे जिप तक फट गया. Now it's a Oh very shit. embarrassing moment for me, but मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने के लिए, because I was so petrified. अब क्या करूँ, अब तो और ठंड लग रहा है. And I couldn't get on the horse again. So it took me two people to make me sit on that horse. It's very difficult for a person at 155 kilos because this person's life only revolves around food. You you met Vidyut Jammwal. I'm not sure whether it was a collaboration or you trained him or he was your client. I'm not sure. So we want you to talk about those two things. While hosting one of the transformation challenges, I got an opportunity to speak to Vidyut because I had to interview him. 8 months down the line, when I went to my friend's sister's wedding, nobody could recognize me. I was down by Wow. 35 kilos. This is such an amazing and inspiring journey that we are definitely going to uncover now, maybe in next 30-40 minutes of our conversation. अगर मैं आपसे कहूं कि कोई 150 किलो का इंसान एक फिटनेस कोच बन सकता है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? Impossible, right? What if I say yes, it is possible to become a fitness coach if you have the right focus, determination, dedication, right motivation and direction. आज हम सिद्धेश वोजला की कहानी सुनने वाले हैं, जिन्होंने ना सिर्फ खुद को ट्रांसफॉर्म किया बल्कि दूसरों को फिट होने में मदद करने का जुनून एंड पैशन जगाया. अगर आपको भी फिटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है या फिर आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं टू बी फिट, तो ये एपिसोड आपके लिए है. क्या आप जानते हैं, सिद्धेश भी खुद अपने वेट से परेशान था. आपने सही सुना, 150 किलो से ज्यादा वेट के साथ जिम जाना तो दूर, स्टेयर्स चढ़ते हुए भी परेशानी होती थी. बट सिद्धेश ने हार नहीं मानी और आज वो एक इंस्पिरेशन है, जिन्होंने अब तक करीब 3000 लोगों को उनके फिटनेस जर्नी में कोच एंड गाइड किया है. He was also invited as a guest lecturer at IIT Madras and IIT Mumbai to talk on health and fitness. Also, he interviewed Bollywood actor Vidyut Jammwal about his own fitness regime. Not just that, he also did a photo shoot for Times of India. So let's hear about his amazing journey and get some guidance from him about building a career in fitness industry. Hello Siddesh. Welcome to the Career Storyteller. It's a great pleasure and honor having you on our show. Welcome to the show. Thank you. Thank you so much, Ramya. Thank you so much for a warm welcome. Thank you. Honestly, we wanted to have a podcast with you since the longest time, and we are really glad that you are here finally. And today we want to have a conversation with you on your journey to becoming a fitness coach. So we, the whole idea of doing this podcast with you is that people, especially youngsters, can learn from your journey, and if they want to pursue fitness coach as a career, then how can they do that through your journey? So maybe to begin with, I want to maybe have understand the basic question that what inspired you to become a fitness coach? Did you always know that this was your calling, or did your path take some unexpected turns? How did you start this journey? No, absolutely. My path has taken unexpected turns like anything because never in my wildest dreams I could imagine that I'm going to become a fitness coach. The reason is because back in 2013, I weighed 155 kilos. That was the highest that I ever could reach. मेरे घर का जो स्केल था ना वो All right. 150 ज्यादा था. But my weight was 155 kilos. I am born and brought up in a Brahmin household. I am also a Vedic student along with the formal education that I've done. I went to St. Francis. So मैं school से आता था and I used to spend good amount of time learning Vedas with my grandfather. So as a Brahmin, growing up in a Brahmin household, I used to go to Brahman Bhoj. So I used to like Yes. food.
तो मैं खाता था and I went on eating and went on eating. I completed my schooling, I completed my college life, and in no time I started reaching around 100 kilos. People told me यार बहुत मोटा हो गया, बहुत मोटा हो गया, कुछ कर ले. But the point is you are on your own high, right? So 120, 130, 140, I couldn't even imagine when could I reach, I reached 155 kilos. So I never ever in my dreams even thought of losing weight. Forget about becoming a coach. So what happened was in 2013, one of my friends got married and he told me, यार हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, तू चलेगा क्या? I said yes, आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा. That was the first time a Mumbaiker is going to see बर्फ. हम बोलते हैं ना कि बर्फ देखना है. तो मैं बोला यार हाँ बर्फ हाँ. देखने का बहुत मजा आएगा, जम्मू जाऊंगा. So as we reached there on the foothills of the temple, Vaishno Devi temple, what happened was वहां पे घोड़े वाले आते हैं. People come, sir, घोड़ा 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 घोड़ा. To reach the temple, they take around it's around 16 kilometers like this. It's a slope, and you have to go on the horse. You have to come back on the horse if you want to, or a lot of people go walking as well. It's a Mata Vaishno Devi shrine. So all my friends got horses. It was 4, 5 in the morning. None of the horse guys came to me. None of them came to me. I said, मैं रुका ही था यार, अभी आएगा, अभी कोई आएगा, अभी कोई आएगा, अभी कोई आएगा. No one came to me. And I Oh was like, God. अंकल मेरे को जाना है ऊपर. 2013 exactly 10, 11 years ago. So I said, यार ये क्या हो रहा है? मैं तो इतना दूर से खुशी खुशी आया था. I was wearing 4 layers of clothes. I used to wear all size. There is a store of pantaloons का एक brand है, all करके. All All का full right. form है, a little larger. तो उसके में size 5, size 6 हुडीज पहनता था मैं. None of the horse guys came to me. I went to a guy. I told him, "Uncle, मुझे ऊपर जाना है." I was 24, 20, 23, 24-year-old guy back then. I said, "Uncle, मुझे ऊपर जाना है." अरे तू घोड़े पे बैठेगा ना, घोड़ा मार देगा तू. This is what Oh this is shit. what they told me. मैंने बोला, अंकल मैं तो 100 किलो का ही हूँ और हमको मत सिखाओ 100 किलो क्या होता है. हमारा रोज का काम है ये. So that thing, that thing hit me so hard that over the period of time, while I was going from 80 kilos to 150 kilos, everybody told me, कर ले, बेटा कुछ कर लो, बेटा कुछ कर लो, बेटा कुछ कर लो. I was just lying on the TV, lying on the couch and watching TV. I used to, remote control से ऐसे TV देखता था. My father used to tell me, बेटा कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो. बट मैंने कभी नहीं किया. लेकिन जब उसने बोला ना मुझे कि तू बैठेगा ना, घोड़ा मार देगा तू, and that hit me real hard. So at that point, then I said, now how should I go? All my friends already reached Ardakumari. So he said, आपको सिर्फ एक ही चीज ऊपर लेके जाएगी और वो है एक म्यूल, खच्चर बोलते हैं उसको, a cross breed of a horse and a donkey. So he Correct. told आपको सिर्फ एक खच्चर ऊपर लेके जाएगा, तो आप किसी खच्चर वाले को पकड़ो. तो मैंने खच्चर वाले को पकड़ा. मैंने बोला सर लेके जाइए, मेरे आधे दोस्त सब चले गए हैं, ठंड लग रही है. बोला ठीक है लेके जाऊंगा, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट कुड कैरी अप टू 150 to 200 kilos. So while I sat on that horse, or a horse-like creature, that mule, and while I was going towards the temple, मुझे ना स्लाइड शो दिखाई देना शुरू हो गया मेरी जिंदगी का. That बाप what am रे. I missing in life because of this weight. मैं फोटोज में आता नहीं था, मुझे शर्म आती थी इतना. अब आप दोनों के साथ फोटो निकालना होगा, मैं आता ही नहीं था, तो दोनों के बीच में छुप जाऊंगा ऐसे बीच में, क्योंकि पेट दिखेगा. छुपाऊंगा कैसे? दुनिया का सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी था वो, बड़े बड़े कपड़े पहनना. So while I sat on the horse and while I was going towards the temple, मुझे दुनिया की सारी सच्चाई समझ आ गई. That this is what, when it hits you real hard and when you're doing it for your own self, that is when I understood, forget about everything. Let me first lose weight. And also, थोड़ा आगे जाने के बाद एनिमल हस्बेंड्री का कार्ड दिखाना पड़ता है वो घोड़े वालों को. So that guy asked me to get down and to get up again, get on the horse again. While I was getting on the horse again, मेरा जो पैंट था ना, जो मैं पहन के गया था, वो घुटने से लेके मेरे जिप तक फट गया. Now it's a Oh very shit. embarrassing moment for me, but मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने के लिए, because I was so petrified. अब क्या करूँ, अब तो और ठंड लग रहा है. And I couldn't get up, get on the horse again. So it took me two people to, make me sit on that horse. And while I was sitting on the horse, I told that horse guy, अंकल मुझे कुछ दे दो ढकने के लिए, मेरा पैंट फट चुका है, मुझे पूरा दिन निकालना है, मुझे यहाँ से ऊपर जाना है, ऊपर से फिर नीचे आना है, और फिर मुझे घर जाना है. So he gave me his shawl and I had to wrap it around, and that is how I completed my journey of that temple. During that time, I understood one thing, that I have completely ruined my health. And the only person who is going to make it happen, or the only person who is going to work on it, is me. Because my father told me one thing,
मैं तेरे लिए जिम मेंबरशिप ला सकता हूँ, मैं तेरे लिए खाना ला सकता हूँ, मैं तेरे लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दे सकता हूँ, बट बेटा मैं तेरे लिए कर नहीं सकता, करना तो तुझे ही है। एंड दैट हिट मी रियल हार्ड. That is when I came back to Mumbai. I started working out. I started creating a regime out of it. And that is I started losing weight first. And I started believing in myself that this is going to happen. So before I became a coach, this is what happened behind the scenes. So once I was down by 60-70 kilos, लोग बोलने लगे तूने तो पूरा एक आदमी मार दिया. Because मेरा आधार कार्ड का फोटो, मेरे पासपोर्ट का फोटो मैच नहीं करता मेरे करंट फोटो से. एंड आई हैव पर्पसली हैव नॉट चेंज दैट फोटो. हर जगह मेरे को एयरपोर्ट पे रोकते हैं, यहाँ पे हो क्या, ऐसे देखते हैं 2 बार, अरे मैं ही हूँ यार. So because before that, I did everything that I could do to lose weight. I did that. I started enjoying the process because it gave me a new identity. ऐसे सेलेब की तरह देखते थे, यार तू ही है क्या, कैसे किया तूने, यार 50-60-70 किलो lose करना तो बहुत बड़ा बात है. In total, I lost around 78 to 80 kilos. So my leanest was 72 kilos when I did a photo shoot. Wow. That is when I understood that this works. I said अगर मैं अपने आप से कर सकता हूँ, if I can work on my own self, and if I can lose 78-80 kilos, and if I can get to the best shape of my life, and if I can be a part of designer shoots, Times of India वाले घर पे आए थे इंटरव्यू करने के लिए, तो मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ. That is when I understood that thing, and that is how I thought of learning the science behind it. Because अगर 2013 में if you will ask me, if you would have asked me यार फैट लॉस कैसे होता है, तो मैं बोलता था आपको ग्रीन टी पीने से होता है. बिकॉज मैं अज्ञानी था, मुझे ज्ञान नहीं था. मैंने जो लोगों ने बोला मैंने वो किया. किसी ने बोला लो कार्ब डाइट फॉलो कर लो, मैंने किया. किसी ने बोला शाम को 6 बजे के बाद राइस मत खाओ, मैंने बोला साउथ इंडियन हूँ, बचपन से राइस खा रहा हूँ, राइस क्यों नहीं खाऊं. Correct. राइस, व्हाई शुड आई बी स्किपिंग कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाई शुड आई बी स्किपिंग राइस. मैंने हर चीज करके देखा, बट सम थिंग्स वर्कड. आई वाज नॉट एबल टू अडियर टू लॉट ऑफ थिंग्स. दैट इज व्हेन आई सेड साइंस की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ साइंस क्या कहता है. And that is when I started learning about it. And that is when I started off thinking that I should become a coach. So if you ask me who inspired you, my sister inspired me. She said, Anna, you have lost 70-80 kilos on your own. You did it. So when someone is coming to you, you always have that testimony attached with your own name. That मैंने सिर्फ nutrition science Absolutely. पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने करा भी है. So that made me think, यार yes, if you know I genuinely I want to help people because I know the way. You know, थॉमस एडिसन को पूछा गया था कि what is the correct way to build a bulb, to make a bulb, तो उसने बोला था कि मुझे 9999 ways वो भी आते हैं जिससे बल्ब नहीं बनता. तो मैं भी कह सकता हूँ मुझे पता है कि फैट लॉस कैसे होता है, बट मुझे 1000 ways वो भी पता है जिससे फैट लॉस नहीं होता. Right, so this is what made me interested about the entire process of human physiology, that this is how human can change. My face changed, my size of the clothes changed. I was wearing 6XL, 7XL. From there, I came to M size. मुझे photos से डर नहीं लगता. And that is how I landed up being here. Wow, that is such an inspiring journey, Siddesh, to be very honest, to say about it. Because obviously you have gone through that. Maybe, uh, obviously back when you were in 2013, obviously that experience of not getting something done when others are, easily are able to achieve it. Maybe whatever, at that point of time, the constraints were for you, and then now after 10 years, getting into that aspect of where you are helping out your potential clients, or people who reach out to you to help them in their journey. This is such an amazing and inspiring journey that we are definitely going to uncover now, maybe in next 30-40 minutes of our conversation. But to go there, or maybe to move into that direction, maybe I have a very simple question, and I'm sure that's not a simple question. In this 10 years of your transformation, obviously, it's not a simple thing to say that 2013 I decided I want to get myself into a proper shape, and now you are over here. This journey would definitely has been an ups and downs for you, right? uh, how did you keep yourself motivated, or always involved or committed into this thing? That's not easy to do. And because why I'm asking this question, this is from my own experience. I am kind of a person, a laid back person. I at times
decide, from tomorrow onwards, I will put some effort, getting regularly, some form of workout. Be respect. I don't want to say that I'll go and hit the gym. I whatever I get around, maybe I'll do some kind of push-ups, I'll do sit downs or whatever. If I get a rod, I'll hang around or whatever. But then the consistency matters over here. So how did you ensure that you continue doing that for the till now? That's a really very good question. I'd like to elaborate on that. So basically, when I came back to Mumbai, and it was 26th of March. I am, this is my birthday month. So I went to Vaishno Devi on 8th of February 2013. It was a 15-day tour. मैं पूरा India देख कर आया, North India, and I came back home. I was just thinking, what do I need to do? What do I need to do? So then came March, right? My father asked me again the same question. What do you want for your birthday? I said, वही मुझे कपड़े लेने हैं. So he took me to the all size store. And all size store के कपड़े ना थोड़े महंगे होते हैं. The bigger the clothes, more money you have to pay to cover your body. So again, the same plain shirts or check shirts. And again, the size 57, 58 ka jeans. 58, 58, I'm talking about the waist. So he told me, My God. so he told me, I was not happy to go and to buy those clothes, to be very honest. Because मेरा दिमाग खुल चुका था उधर ही घोड़े पे. राइट, मुझे उसने 2 सेकंड में मेरी पूरी उसने मुझे रियलिटी चेक दे दिया, मुझे पूरा फैक्ट्री रीसेट कर दिया उसने मेरे सिस्टम को कि तू घोड़ा मार देगा बोल के, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड वो जो जिंदगी में मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, मेरे आसपास वाले नहीं कर पाए, बिकॉज सी व्हेन यू सी समवन हु इज 155 kilos, obviously you're hanging around with them. If let's say if Ramya and if Vivek, if I'm hanging around with you guys, and if you are at that weight, I'll keep on telling you, I'll keep on telling you, I'll keep on telling you. जब तक आपके दिमाग में रजिस्टर नहीं होता. तो मेरे साथ ऐसे बहुत लोग थे who kept on telling me, who went on telling me, but मैं सुना नहीं. मुझे कोई एक्सटर्नल एंटिटी का जरूरत था जो मुझे मेरा फैक्ट्री रीसेट करा दे. So my father told me the same thing. Beta, I can get you the clothes. I can get you a gym membership. I can get you whey protein. I can get you a cook. I can get you everything. You're my son. मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन बेटा यू हैव टू बी वेरी सीरियस फॉर योर हेल्थ. आप अच्छे घर से आते हो, पढ़े लिखे हो, संस्कारी हो, अच्छा वाणी है आपका, वेद 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 आता है आपको, मधुर वाणी है. आप नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? So when he said that, I said, this birthday, I don't want anything. I just want you to gift me a gym membership. 1st of April 2013, I enrolled into a gym. I started going to the gym. I went for 2 days, then I didn't go to the gym. First day गया, मैंने plank किया. I could hardly do 2 to 3 seconds of plank, not more than that. Because I was just trying to, वो gym anxiety होता है. A lot of people are watching you. क्योंकि बचपन से मुझे आदत थी. अप्पू घर आ गया, हाथी आ गया, एलिफेंट आ गया, वो तो सुन सुन के हम बड़े हुए हैं. कभी कोई, एंड यू नो व्हाट, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू कंप्लीटली गेट इम्यून टू ऑल दोस लाइंस. आपको फर्क ही नहीं पड़ता. जैसे सलमान खान की मूवी हिट हो या फेल हो, वो सक्सेस के पार हो चुका है. द सेम वे, फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट दिस इज योर लाइफ. एंड टू केटर दैट थिंग, टू काउंटर दैट थिंग, मैं ये सोचता था कि लोग मुझे जैसा हूं वैसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं. अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू दिस. Okay, I am obese. I need to work on my health. Why? So that I can get fit. Why? So that I can live longer. That's it. I don't want to live longer. मैं जैसा हूं वैसा खुश हूँ. मुझे आप लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं जैसा मैं हूँ. तो मुझे एक चीज समझ आ गई, दैट किसी को करना है तो मुझे ही करना है. I went to the gym for 2 days. I couldn't handle that thing. I came back home and I started skipping the gym for the next 5 days. मैं इतना थक गया, इतना बॉडी सोर हो गया. Then I understood that no, इतने टाइम बाद मैंने कुछ डिसाइड किया है. चलो करके देखता हूँ. करके देखने में क्या है, ऐसे भी मैं जीरो पे हूँ. अगर कुछ अच्छा हो भी जाता है तो बोनस ही है. सो आई स्टार्टेड Correct. गोइंग टू, ऐसे भी जीरो पे हूँ. वो मुन्ना भाई में बोलता है ना, भाई अपन ऑलरेडी अंदर है और कितने अंदर हो जाएंगे. Correct. ऐसे वाला, ऐसे भी जीरो पे हूँ. क्या खोने के लिए क्या है, कुछ है क्या? कुछ नहीं है. लोग पीछे पड़े हैं, घर वाले तो परेशान कर रहे हैं, क्यों खा रहा है, क्यों खा रहा है, क्यों खा रहा है, कुछ कर ले, कुछ कर ले, कुछ कर ले, कुछ कर ले. मैंने बोला करके देखने में क्या है. I started going to the gym. I started enjoying cardio. 15-20 minutes चलता था, थोड़ा क्रॉसफिट करता था, and I used to come cross trainer करता था. I used to come back home. Then someone told me start weight training. So I started incorporating weight training every alternate day. So slowly and steadily at that body weight, I started losing 1 kilo.
My only goal was मैं बाहर का नहीं खाऊंगा. It's very difficult, to be very honest. It is very easy for me to say now after 10 years, but it's very difficult for a person at 155 kilos because this person's life only revolves around food. Boredom, खाना. दोस्त से झगड़ा हो गया, खाना. टीवी का चैनल नहीं लगा, खाना. रात को नींद नहीं आ रहा है, उस समय तो नेटफ्लिक्स था नहीं. टीवी चाहिए, सब लोग कुछ खा रहे हैं, खाना. सो बेसिकली फूड वाज अ कोपिंग मैकेनिज्म. लाइक बहुत लोगों के लिए सिगरेट होता है, बहुत लोगों के लिए अल्कोहल होता है, बहुत लोगों के लिए सब्सटेंस अब्यूज होता है. ओके, फॉर मेरे लिए वो खाना था. खाना 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 खाना. इट यूज टू मेक माई लाइफ इजी. अच्छा लगता था. कभी कभी तो भूख लगती भी नहीं थी, फिर भी टाइम पास के लिए खाना. बिकॉज समवन इज ईटिंग समथिंग, आई हैव टू ईट इट. आई मेड वन रूल, मैं बाहर का नहीं खाऊंगा. घर के दहलीज के बाहर का खाना मैं नहीं खाऊंगा. जो भी खाऊंगा घर का खाऊंगा. मुझे पता नहीं था, हाउ मच प्रोटीन शुड आई बी ईटिंग. आई डोंट नो व्हाट मसल्स आई यूज्ड टू वर्क. मुझे कुछ पता नहीं था. आई जस्ट मेड वन सिंपल रूल, बाहर का खाना बंद. द ओनली थिंग आई स्टार्टेड ईटिंग आउट इज व्हेनेवर आई फेल्ट लाइक आई यूज्ड टू ईट वन सैंडविच. मुंबई का सैंडविच. आई यूज्ड टू टेल हिम, नो बटर, नो अनियंस, जस्ट पुट एवरीथिंग दैट यू वांट टू. वेजीज डाल के, आलू भी मत डालना. Just make a sandwich. Whenever I felt like, I just started going and I started eating one sandwich. I lost 1 kilo. Then I lost one more kilo. Then I lost one more kilo. So in a matter of 3 4 months, 3 4 weeks, I lost around 3 4 kilos. So I was very happy. I said, this is working. ये मजा आ रहा है. Now I understood one thing. Every action is going to have an equal and opposite reaction. And I am a kind of a guy, I'm an extremist. मैं अगर करूंगा तो ऐसे करूंगा कि मेरे से मतलब दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर मी. और अगर मैं नहीं करूंगा, मैं काउच से उठूंगा भी नहीं. आइदर इट इज ऑल और नथिंग फॉर मी. सो आई सेड, मुझे 1 किलो 10 बार और लूज करना है. आई डोंट हैव टू लूज 10 kilos. आई जस्ट हैव टू लूज 1 kilos 10 times. सो आई सेड, करना क्या है? करना यही है जो मैं कर रहा हूँ. आई जस्ट नीड टू बी रेगुलर एट इट. आई जेन्युइनली स्टार्टेड एंजॉयिंग माई जिम. मैं जाता था, कपड़े भीगते थे मेरे. When I used to do cardio, so I used to feel like this is my achievement. तो कपड़े भिगा के आता था मैं पूरा घर पे. I used to do weight training, I used to do cardio, I used to come home and I used to eat घर का नॉर्मल खाना. अब उसमें कितना प्रोटीन है नहीं पता था, अज्ञानी था मैं, right? But this thing helped and I went on doing it. I went on doing it and I went off social media for the first 6 to 8 months after I started doing this. 8 months down the line, when I went to my friend's sister's wedding, nobody could recognize me. I was down by Wow. 35 kilos and I was like, people literally touched me. तू ही है क्या? A lot of people told me, तेरे को कैंसर वैंसर हो गया कि इतना सूख कैसे गया? Oh God. Once your face changes, अरे तू कितना अच्छा था पहले, क्या गोल गोल चल रहा था, ये क्या हो गया, पूरा सूख गया. अरे तेरे को रोग वोग हो गया क्या कुछ? Correct. This is the reality. This is something that my clients tell me as well when they lose weight and when their peers tell them about this. So you're not only going to get good compliment, but a lot of people who are not doing anything, उनके टारगेट बन जाते हो. यार इसने कैसे कर लिया? So they start speaking about it and that's very normal. मुझे तो आदत हो चुकी थी. But I was very happy that यार मैंने कर लिया. पता नहीं क्या किया लेकिन किया मैंने. Yes, not all days are going to be the same. There are going to be some low days, there are going to be some high days. There are going to be days when you're going to be extremely motivating, and there are going to be days when you're going to be extremely low. You're going to, you're going to sit and अब सब घर पे बैठे रहोगे. So there are going to be days and low days होगा, high days होगा. Same way, every morning when you wake up and you want to log in for work, nobody is motivated to log in for that work. Nobody is motivated to brush your teeth every morning. But you do it out of your hard wiring that you have done over the years. Entire COVID time, we all logged in for work. People were dying out there. Why? What made you motivated? There's no motivation, there's clarity. We all have Correct. purpose. What about consistency? Just Vivek just asked me. I'll tell you something. बचपन से लेके 10 साल स्कूलिंग किया, 2 साल पढ़ाई किया, +2 किया, +3 किया, किसी ने इंजीनियरिंग किया, किसी ने 15 16 साल हमने कंसिस्टेंटली पढ़ाई किया. Then we started working. And I'm sure you guys have been working from last 8 to 10 years. So 20 25 years consistently we have been working something at something, right? So consistency है ना हमारे खून में है. We don't have a consistency issue. We don't have a motivation issue. The thing is we have a priority issue. आज Wow. एक
आज एक बंदा जो रास्ते पे है बेचारा, जिसको पता ही नहीं है, हु इज लॉस्ट, लाइक आई सी अ लॉट ऑफ मेन, बियर्डेड मेन बैठे हैं मस्त में, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं। कभी हमारे घर का खाना बच जाता है ना, my mother tells me, just go and give it to them, you know, or anything on my birthdays or something like that. A person who has not worked consistently for a month, for 2 months, for 3 months, उसको कंसिस्टेंसी इशू होता है, हमको नहीं होता। हम 27 साल 28 साल से, पिछले 27 साल से कंसिस्टेंटली हम काम कर रहे हैं। दैट इज कंसिस्टेंसी। Someone who's working out at the gym, let's say he's a bodybuilder, he comes to the gym, he trains for 2-3 hours, he trains very well, he goes home, he follows the regime, he builds his body. And what do we say? अरे यार क्या consistently काम कर रहा है यार, वो 2-2.5 घंटे consistently काम कर रहा है, जिसके लिए वो आज एक कोच है। हम 8-9 घंटे कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं हमारे काम के लिए। कंसिस्टेंसी दोनों का सेम है, वो अपने काम में कर रहे हैं, हम अपने काम में कर रहे हैं। The point is, we don't have consistency issue, we have a priority issue. We have so consistently logging in for work from last so many years that we forgot about other things in life, right? So we don't need anything, we just need to prioritize that thing. ये फिटनेस है, इसको लो और इसको 8 घंटे के पहले या तो 8 घंटे के बाद में थोड़ा थोड़ा डाल दो, ये आपकी जिंदगी का स्वाद बन जाएगा। And that is what priority is. It's very simple. Wow, amazing. I loved how you put our routine into this consistency thing. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि that ऐसा भी कोई मोटिवेशन मिल जाएगा, बिकॉज द वे यू सेड कि मुझे मतलब पतला होने के लिए लोगों ने बहुत बोला, बट देन मैं कभी नहीं हुआ। सेम थिंग मुझे लोगों ने सुबह उठने के लिए बोला। दैट इज इट, वन थिंग दैट आई जस्ट कैनॉट गेट इट राइट। आई मीन मेरे मॉम ने बचपन से, मेरी मम्मी ने बोला है यार जल्दी उठा कर, जल्दी उठे, क्यों नहीं उठती है, क्यों नहीं उठती है। आई एम लाइक नाइट आउल, आई कैन बी awake till 3 o'clock, 4 o'clock in the morning, मतलब during my college days also for studies and all। सुबह बस मेरे से उठा नहीं जाता है। तो शादी के बाद भी विवेक he got fed up, he is like अभी मैं बोलना ही छोड़ दूंगा तेरे को। that was the case। वो लॉकडाउन हो, नॉन लॉकडाउन हो, जो भी हो, मेरे से उठा ही नहीं जाता था। फिर पता नहीं मेरे को अंदर से क्या ट्रिगर हुआ, अपने आप से हम लोग ने, जब से, जैसे मैंने बताया बिफोर दिस रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, वी गॉट दिस होम रेनोवेटेड राइट, दिस स्पेशली दिस बेडरूम वी गॉट रेनोवेटेड। एंड ये जो मस्किटो नेट है, ये हल्का सा, ये पूरा बंद करके हल्का सा ना खिड़की खोल के हम लोग सोने लगे। तो व्हाट हैपेंड वाज, अर्ली मॉर्निंग है ना, बर्ड्स का चर्पिंग सुनाई देता है। एवरी सिंगल मॉर्निंग बर्ड्स का चर्पिंग सुनाई देता है। that got something into me and I started getting up early on my own। और अभी भी अगर मेरे मोबाइल में देखोगे ना, आई हैव लाइक 5 अलार्म्स एंड दिस इज द केस सिंस माय चाइल्डहुड। मतलब शादी के पहले तो माय मॉम वाज देयर, आई एम लाइक अम्मा प्लीज उठाओ मेरे को। बट देन शादी के बाद 4 अलार्म्स, 5 अलार्म्स, नाउ आई हैव turned off all my alarms। I get up automatically and I started doing dhyanam। So now I'm doing dhyanam and I feel so happy। Wow. It's for me, it's like very big achievement। It's like भाड़ में गया मेरे लिए, बाकी कुछ हुआ है नहीं हुआ, मैं अभी सुबह उठ रही हूँ। अभी लोगों ने बोल बोल के थका दिया। जैसे for you it was a घोड़ा thing, for me it's a bird chirping that got me wake up early in the morning। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे type of reasoning with consistency that since we are working since so many years, I don't think so that anyone would ever give। This is the best thing। I think I will use this analogy even in my coaching। Thank you, Siddesh, for that। Thank you. So talking about the coaching, and you also spoke about the clients, right? So maybe if you could share a story of a client, because I follow you, I know that there are so many clients of yours who put their achievements day in and day out। So if you can share a story for our audiences Yes. of a client, how you help achieve incredible results, what were their initial challenges and how did you guide them towards success? Sure. So in 2016, I started coaching professionally, and it's been last 7 to 8 years that I've been coaching professionally. I've coached more than 3,000 people all over the world. And yes, this includes a lot of actors, a lot of sportsmen, a lot of general people from general population, a lot of them. So I still remember a favorite case of mine, because that guy enrolled with me at 151 kilos. It was 2018. Yes.
2.5 years after I became a coach, this guy enrolled with me, and I got a notification that this guy has enrolled with you for 24 weeks. So I went on an initial call with him. I saw the details that this guy was 151 kilos. He was from Hong Kong, and he was in a pre-diabetic stage. Second, he was taking metformin. जब आप diabetic होते हो, diabetic type 2 होता है वो stage में जब आप, so doctor prescribes you a medicine called metformin. He used to take that twice a day, 1000 mg. He had high blood pressure. Like he had दुनिया भर के उनको बहुत सारे health conditions थे. So I went on a call with him. I saw his pictures. I said, "This is me." I said, "This is me." And he said that is the only reason I could resonate with you and your videos and everything that you do, because I wanted to work with someone who has lost the same kind of weight and I am on the same journey as you are. So, so I went on a call with him. I explained him the thing that आपको यहाँ से strong होना है. ये जो यहाँ से आप strong हो जाओगे ना तो body आपको automatically follow करेगा. सबसे बड़ा चीज ये है, इसको कंट्रोल करना है. वो एवेटार मूवी देखा है ना, उसमें अगर आपका टेल और ड्रैगन का टेल मिल जाता है तो ड्रैगन आपको उड़ने देता है. ये वो ड्रैगन है. So I told him that this is what you need to understand. And he was also, someone who was from corporate. तो अच्छे अच्छे खासे पोजीशन पे थे वो. So I could make him understand what I feel. So I told him that just do one thing, and that is one day at a time. See, great transformations are built on great trust. Right? If I can trust someone, when I go to my doctor, right, and I tell them that मुझे बुखार है, मुझे neck मेरा sprain हो गया, half of my pains are vanished just by entering into a room. कि Absolutely true. ये मुझे ये मट्टी भी खिला देगी ना तो भी मैं सही हो जाऊंगा. मुझे जो भरोसा है उन पे, बिकॉज आई एम गोइंग टू हर सिंस आई वाज अ किड. मैं छोटा बच्चा था जब से मैं उनके पास जा रहा हूँ, एंड आई हैव मेंटेन्ड द सेम डॉक्टर फॉर इयर्स. सो टुडे आल्सो व्हेन आई गेट समथिंग मैं सीधा चले जाता हूँ, बिकॉज मैं बीमार होना मेरे लिए नुकसान है. मैं बीमार होकर 3 दिन खाली नहीं बैठ सकता. आई नीड वर्क. आई नीड टू कीप ऑन टॉकिंग टू पीपल. आई नीड टू कीप ऑन यू नो लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को एक राह दिखाना मेरी आदत है, और वो मेरा पैशन बन चुका है, मेरा जुनून बन चुका है. दिस इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. मैं खाली बैठ कर टीवी देखने वाला आदमी नहीं हूँ. So I told him that just do one thing, and that is one day at a time. So what I did was, after looking at his reports and everything, I said, आपका ट्राइग्लिसराइड्स खराब है. वो मुन्ना भाई में बोलता है ना, मामू तेरी तो वाट लग गई है, लेट जा. So I told him, ट्राइग्लिसराइड्स खराब है, लिपिड प्रोफाइल खराब है, LDL HDL खराब है, इंसुलिन सेंसिटिविटी खराब है, HbA1c was 8.4. I said we have to work on all these internal parameters. बाहर से हम कितना भी मेकअप लाली लाली लिपस्टिक लगा के अच्छे दिख सकते हैं, बट अंदर का पैरामीटर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज जिंदगी उससे जीनी है. So he said, "Sir, exactly as you'll say, I'll do it." I started designing his nutrition plans. I started designing his training plans. सबसे पहले जब भी मैं कोई प्लान बनाता हूँ ना, there are three important things that I want everyone to understand. So our food is made up of three important macronutrients: carbohydrates, proteins, and fats. हमारे इंडियन डाइट में ना कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है ना. Someone who is a non-vegetarian, he is going to get a lot of proteins from his diet. He's going to get chicken, he can eat eggs, फलाना ऐसे कुछ खा सकता है. So I told him that your protein intake is very low. So I bumped up his protein. I created all his plans. I said no skipping anything. Rice भी खाएंगे, bread भी खाएंगे, आलू भी खाएंगे, potatoes भी खाएंगे, दूध भी पिएंगे. Because अचानक से आपकी जिंदगी में आके आपको भूखा मारना मेरा काम नहीं है. राइट? अगर भूखा ही मरना है तो वो तो खुद से भी कर सकते हो. आपको मेरी जरूरत क्या है? I don't want to enter into his life, and I don't want to destroy his staple. I'll give an example. So Ramya and Vivek, अब बचपन से आप दोनों का एक palate है. We all have some eating habits. Like I like bread, I like oats. She likes bread. She might be liking oats. अब अचानक से आपकी जिंदगी में आके आप जो खा रहे हो उसको साइड में रख के मैं अपनी मर्जी का खाना दूंगा आपको. It is going to be very difficult for you to just cope up with it. वहां तक आने के लिए हमको टाइम लगेगा. सो आई सेड मुझे कोई खाना निकालना नहीं है. ही वाज अ गुजराती. आई सेड यू कीप ऑन ईटिंग व्हाट यू ईटिंग, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैलोरी इनटेक. आई सेट अप इज कैलोरी इनटेक. दिस इज द कैलोरीज दैट यू नीड टू ईट. हम पूरा फ्रूट्स खाएंगे, हर चीज खाएंगे. वी डोंट वांट टू डीमोनाइज एनी ऑफ द फूड सोर्सेस, राइट? एंड आई टोल्ड हिम दैट दिस इज द वर्कआउट प्लान दैट वी नीड टू डू. So he said yes. And I gave him a step goal that this is what you need to walk every day. He stays in Hong Kong. He said, sir, office आना जाना होता है, थोड़ा चलना वलना हो जाता है. I gave him a very small step goal. But I focused on two things: his training and his food. And I told him sleep like a drug lord. जितना हो सके उतना सो लो. तो बोला सर सोने से तो मोटे होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, सो लो. Because the entire process of fat loss and the recovery happens when you're deep asleep. आप जितना ज्यादा सोओगे उतना आप मस्त में enjoy करोगे. So he said, okay. I have been coaching him since last 5 years. That guy is down to 75 kilos. Wow.
And the highlight of this is, it's been 5 years that I've been coaching him, and every week I ask them for updates, right? So I have certain parameters that you have to fill up my progress tracker, so I can understand what exactly did you do all the week. Khana kitna tha, ye kitna tha, steps kitna tha, water intake kitna tha, pani kitna tha, so that I can micromanage your things. Okay, this was week one, this was week two, this was week three. So slowly and steadily, he started enjoying the routine. I Fitness for me is making someone do fitness very easily. Fitness for me is very simple, not using hard jargons, mammalian target of rapamycin, metabolic rate, metabolic damage. क्या करना है उसको? उसको रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे? उसको बड़ा बड़ा वर्ड्स फेंकूंगा, उसको समझ में क्या आएगा बेचारे को? उसको पतला होना है, उसको लीन होना है, उसको हेल्दी बनना है. सो माय आइडिया ऑफ फिटनेस इज, आई विल मग अप एवरीथिंग, आई लर्न एवरीथिंग, मैं सब कुछ सीख लूंगा, लेकिन उसको इतना इजी फॉर्मेट में उसके सामने पेश करूंगा ना, उसको ऐसा नहीं लगेगा अरे ये तो कोई बहुत बड़ा चीज है ही नहीं, ये तो इतना इजी है क्या. I purposely I start them with less workouts so that they don't get the feeling of, oh, I have to work out again. If I'll give an example. आपके सामने मैं दो बुक्स रखता हूँ, एक 500 पेज का और एक 5 पेज का, एंड आई आस्क यू गाइस, दोनों में से कोई एक बुक उठाओ, लेकिन जो भी बुक उठाओगे ना पूरा पढ़ के दिखाओ, कौन सा उठाओगे? ऑब्वियसली पतला वाला। राइट. सो मैं 25 एक्सरसाइजेस क्यों दूं उसको? जस्ट गो एंड डू 3 एक्सरसाइज, जस्ट हिट योर चेस्ट ऑन डे 1, डू 15 minutes of cardio, come back home again. He started enjoying those things. Earlier he felt like fitness is a root, मेरे लिए बर्डन है. I said simple, पूरा दुनिया पूरा जिंदगी पड़ा है, अच्छे से करेंगे, एंजॉय करेंगे, मजा आना चाहिए. मजा नहीं आया ना, वो पनिशमेंट है, तुम लंबे समय तक कर ही नहीं पाओगे, तुम कितना भी पैसा फूंक लो कुछ नहीं होगा. तो माइंड इज अ वेरी आलसी प्रोडक्ट. ये माइंड है ना, वो तो आलसी है. अगर आप घर के बाजू में बैठे हो, दरवाजे के बाजू में, और किसी ने बेल मारा, तो हम क्या बोलते हैं? तू दरवाजे के पास खड़ा है, तू जाके खोल. करेक्ट। बिकॉज एफर्ट डालना नहीं है हमको. 10 एक्सरसाइज करना है, 10,000 स्टेप्स करने हैं, 8 घंटा लॉग इन करना है, खाना भी बनाना है. अरे मत कर, 3,000 स्टेप्स कर, 3 एक्सरसाइज कर, 1 day at a time. द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. एक पेज पढ़ोगे ना हर दिन, 1 महीने में बुक खत्म होता है, और 1 साल में 12 बुक्स खत्म होते हैं. एक ही दिन पढ़ूंगा, आधा बुक पढ़ के दिखा मेरे को, आधा बुक चाहिए, तो इतना बड़ा बर्डन लगेगा ना, वो यू विल स्टार्ट हेटिंग दैट प्रोसेस. He was off BP medication, he was off HbA1c medications, he was off metformin. I have the reports. And last December he came to meet me, and the highlight is I have not even seen that guy. Because वो जब भी अपना फोटोज भेजता था ना, मुंडी काट के भेजता था. Because I have a lot of clients who don't send me the pictures, मुंडी काट के भेजते हैं, क्योंकि अपने अपने इनसिक्योरिटीज होते हैं. I said fine, no problem. I करेक्ट। just see your condition every week. So when I met him in Inorbit, मलाड आए थे वो, मैंने उनको पूछा मैं आपको पहचानूंगा कैसे? बोला सर स्टारबक्स में आ जाना, मैंने काला टी शर्ट पहना है. मैंने बोला ठीक है, मैं पहुंच गया स्टारबक्स, मैंने काला टी शर्ट पहना था. सर मैं सामने वाली दुकान में आ गया, आप आ जाओ. तो दैट इज हाउ आई मेट हिम. एंड ही इज द गाय जिसने मेरे सामने 75 किलोज लॉस किया है, एंड हिज लाइफ कंप्लीटली चेंज्ड. जो आदमी कपड़े अपना तन छुपाने के लिए कपड़े पहनता था, आज वो सूट्स पहन रहा है, आज वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है. द हाईएस्ट things, the highs in life is to wear good clothes for obese people. हमारे जैसे लोगों को है ना, कपड़े मिलते नहीं थे. हम लोग को बोला जाता था तुम जीन्स सिला लो, तुम कपड़े सिला लो. तो हमारे जैसे लड़के जब 50 रुपए का टी शर्ट पहनते हैं ना, एम साइज का, और अच्छे से फिट आता है और बाइसेप दिखता है ना, बहुत मजा आता है मन में. उससे बड़ा हम हमारे लिए वो लैम्बोर्गिनी उरुस में घूमने जैसा है. So when I met him, he was wearing those black t-shirt and he was looking so good. बोला सर ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हाई है, क्योंकि पैसे तो कमा लूंगा आज नहीं तो कल, लेकिन ये जो नई जिंदगी मिली है ना, कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी चीज करने की. Now that confidence that he has got in life, he is a life changing transformation in his circle. 75 किलोस कम किया है, अब उसको एक कॉन्फिडेंस और आ गया है कि अगर मैं खुद के ऊपर काम कर सकता हूँ, मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ. And that is the highest high of my life as a coach. Yes, absolutely. And while you were speaking, also, I mean, I was just reflecting back. Ki fitness is something. It cannot be something that we call as a crash course. It should be part of your lifestyle. While you were talking about, that is where I was able to relate to it. It cannot be just ki I go to the gym or I do any sort of workout, be a cardio or be anything. It cannot be a crash course saying that I'll do it for 15 days or for a month or maybe say for 3 months. No, if you want to sustain it or if you want to continuously get the results out of it,
it should then become part of your lifestyle. It cannot be, just कि हाँ, मैंने कर लिया, course हो गया and I'm done, I'm fit. No, it can't be that way, right? Correct. Absolutely, yes. So fitness is always going to be a lifestyle, and fitness is something that you have to, वो हर दिन करने वाला चीज है. Like how you brush your teeth and everything, you have a certain responsibility towards your health as well. Now, as a coach's perspective, whenever I get clients who are above 45 years of age, जिन्होंने रगड़ के काम कर लिया, आईटी में सब कुछ कर लिया, घर गाड़ी बंगला बना लिया, बच्चे पैदा कर लिए, जिंदगी के सब सुख और अध्याय खत्म कर लिए, and when they come to me and when I see the reports and when they tell me, sir, all the money that I have earned, I don't want to get it back on medical bills and expenses. What are the three biggest highs of life for anyone? घर पे मुझसे हमसे क्या बोला जाता है, बेटा पढ़ाई करो या नौकरी करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करने, पढ़ाई हो गया चलो, नौकरी करो, जॉब करो, ओके, उसके बाद शादी करो, ओके, उसके बाद बच्चा करो, ओके, उसके बाद घर करो, ओके, तीनों हो गया, अभी अब हेल्थ पे कब ध्यान देगा तू? So the point Correct. is, that is the most important thing. We all want to be fit. There is always one person in the group who is absolutely fit. उसको देख के मजा आता है, क्यों? क्योंकि वो अपना खाना छोड़ता है, क्योंकि वो पागलों की तरह खाता नहीं है, उसको पता है कहाँ रुकना है. There are some lean people. और एक ग्रुप में और एक लड़का होता है जो मेरे जैसा होता है, जो बचा हुआ खाना ग्रुप का दोस्तों का खा लेता है. ये खत्म करेगा, ये Correct. खत्म करेगा, ये खत्म करेगा. Because that is the ultimate truth of our life. आपके ग्रुप में भी है, मेरे ग्रुप का लड़का मैं था. अरे वेस्ट कौन करेगा, मैंने कॉन्ट्री किया है, 2,500 का बिल हुआ है तो 600 रुपया मेरा गया है, मैं कॉन्ट्री किया है, मैं अपना वसूल करके जाऊंगा. 12 पाव 16 नान खा रहे हैं. देयर इज नो एंड टू इट, एंड वी यूज्ड टू Yes. ब्रैग अबाउट इट, मैंने 12 पाव खाया, ये खाया. सो व्हाट आई मीन टू से इज, all the money that we earn as individuals, taking care of our families, सपने पूरे करते करते, that should not go back on our medical bills and expenses. जितना भी म्यूचुअल फंड का पैसा कट रहा है हर महीने, वो बाद में जाके है ना, ये सब के पीछे कटना नहीं चाहिए. बिकॉज कल को डॉक्टर ने बोल दिया कि लिपिड प्रोफाइल खराब है, उससे आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं कि यार 4,000 कम कर दे, वो बोलेगा जो रेट है वो देना ही है. सो Correct. ये इसके साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आवर फोर फादर्स, हमारे फोर फादर्स को पता चल गया था, हमारे फोर फादर्स को पता चल गया था, ये दे वर फिट. आज भी मैं अपने गांव जाता हूँ, जब भी मी एंड राम्या आर फ्रॉम द सेम विलेज, हम आज भी, मैं जब गांव जाता हूँ, मैं अपने मामाओं को देखता हूँ, मैंने अपने अंकल्स को देखता हूँ, मैं आई लुक अप टू माय एल्डर्स, दे आर स्टिल फिट. आज भी औरतें स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठकर रंगोलियां करती हैं. और अब यहाँ के किसी को बोल दो, हम इतने थके हुए हैं. बिकॉज व्हाट हैव वी डन इज, हमने एक लैम्बोर्गिनी खरीदी, ये अपना लैम्बोर्गिनी है, उसके अंदर पेट्रोल डाल के हमने उसको गैराज में रख दिया. वी आर नॉट यूटिलाइजिंग द पेट्रोल, और हमारा वजन बढ़ते जा रहा है, बिकॉज हमने ध्यान देना ही छोड़ दिया. हम सिर्फ हसल कल्चर में घुस चुके हैं. पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज डो नॉट नेग्लेक्ट द हेल्थ, जैसे मैंने किया था. नहीं तो क्या होता है ना, यू विल वेस्ट 5 years ऑफ योर लाइफ, 6 years ऑफ योर लाइफ जस्ट ट्रीटिंग योर हेल्थ. So once you get an alarming situation, or once you get into an alarming situation कि नहीं यार बॉस ज्यादा हो रहा है, get your blood work done every 6 months to understand where you're standing. और थोड़ा भी लग रहा है ना, तो सीधा उसके ऊपर एक्शन करना चालू करना है. नहीं तो 100 किलो 150 किलो हो जाओगे, मेरे जैसे 4-5 साल घुस जाएंगे वापस उसको सही करते करते. तो तुरंत उसको सोल्यूशन तब का तभी करना इंपॉर्टेंट है. सो फिक्स इट एंड देन गेट बैक टू योर वर्क. सो दैट्स व्हाट आई Yeah, बिलीव इन. absolutely true. So हमारे ग्रुप का लड़का मैं हूँ, जो 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 सब कुछ खाता है. But the good thing for me is that I don't put on weight so easily, and even if, because that's a conscious thing that I say कि नहीं, आज मैंने पेट भर के खाया, आज मैंने हद से ज्यादा खाया है, आज मैंने सारे जो जो मुझे मिला मैंने सब हाथ खा पार लिया. कर दिए. But tomorrow I'll ensure that I'll get up same time. I'll do some kind of exercise, irrespective of I won't say ki I'll go to the gym, I'll do whatever, but I'll ensure that I do some kind of activity, because मुझे मालूम है that this is where that trigger, that tick tick tick. नहीं, जब हद से ज्यादा खा लिया है तो then you have to put some effort to go back and do some kind of weight trainings or any kind of sort of exercises that will help you balance it out. As you were saying ki everything has to be balanced out. You cannot do something in extreme and something is just put down because I am not interested. I that's not my priority, right? So that's what my thought process is always. Yes, Ramya. Over to you. एंड आई एम दैट पर्सन जो कुछ खाती नहीं, मतलब ग्रुप में जाएंगे, किधर भी खाने नहीं, बस हो गया. मेरे को तो लिटरली ऐसे बोलते कि ये चिड़िया का खाना खाती है, इतना सा खा लिया हो गया, फिर बाकी सब विवेक खा लेगा, पूरे ग्रुप का खाना विवेक ही खा लेगा. सो वी अल्टीमेटली स्टार्टेड नेमिंग हिम, ही इज अ रिसाइकल बिन, जहाँ पे
हर एक का खाना विवेक के पेट में जाएगा, एंड देन फिर वो विवेक फिगर आउट कर लेगा कि नेक्स्ट डे पे जाके कैसे वो उसको पूरा बर्न आउट करना है, दैट इज हिज हेडेक। बट आपका जैसा है, आई एम क्वाइट ऑपोजिट टू दैट। आई ऑलवेज गो टू एक्सेस स्टोर्स। तो मेरे को कपड़े ही मिलना मुश्किल हो जाते हैं। अभी भी मेरे को इतनी चिढ़ चढ़ती है जब भी खरीदना है कपड़े, क्यों? हमेशा एक्सेस साइज। अगर मेरा नसीब हुआ तो एस में मिलेगा, वरना हमेशा एक्सेस साइज। और आई एम ऑल्सो लाइक यूज टू लिसनिंग, अरे ये छोटी सी है, ये पतली है, अरे खाना नहीं मिलता है क्या घर पे? सो आई एम लाइक नाउ इम्यून, बोलो जो बोलना है। अल्टीमेटली इट्स लाइक how I feel at the end of the day, right? I'm feeling good, so that is all good. Though I don't work out and all, I've now I feel that I should start doing that. But otherwise, I feel as long as I'm feeling good from inside, that's fine. I mean, लोग अभी जो बोलना है बोलने दो, I don't care now. छोटी बोलना है बोलो, पतली बोलना है जो भी बोलो. So that's what I'm exactly opposite to you guys. So maybe now Correct. what I wanted to check is, since you talked about the client achievements, right? So what next section what we want to move is that one thing, your achievements, right? So already you talked about your highs as a coach, but then what I want you to, you spoke about the Times of India photo shoot, right? So I want you to talk about that. Second, I also know that you you met Vidyut Jammwal. I'm not sure whether it was a collaboration or you trained him or he was your client. I'm not sure. So we want you to talk about those two things particularly before we move on to the skill set and other things. Sure. So, I started, first of all, in 2016, I started coaching on my own. Okay. I did my nutrition and training sciences from Institute of Nutrition and Fitness Sciences. And I just went on reading. आज भी I am still a student. There is no end to it. क्योंकि ये समंदर इतना बड़ा है ना कि आपको मैं कभी नहीं बोल सकता कि मुझे सब आता है. Right? So I new researches keep on coming, and I had to keep a tab of everything that is coming my way so that I can keep on upgrading. As I said, for me, fitness is to break it down, anything, any difficult thing, and make it उसको एकदम चूरन बना के, जैसे मम्मी क्या करती है, खाने को पूरा ऐसे स्मैश करके देती है ताकि बच्चा सब्जी खा जाए. मेरे लिए फिटनेस वो है, to make it simpler for anyone who does, right? So I started coaching on my own in 2016. And after that, I joined a fitness online company called Fitter. Back then, it was Squats, and I was a part of Squats. And so when I got onboarded, and I was very happy that I get to work with a lot of other coaches as well. So that is when I discovered that there are a lot of peers that I can learn from. आप कभी किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, आप अकेले काम करते हो, वर्सेस आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो. So I was very successful as a coach when I started on my own, and then I got an opportunity because Squats was booming, and as I had completed the education as well, which was जो criteria जो meet होता है, I got onboarded onto Squats. So once I got onboarded onto Squats, I started, coaching people. People started believing in me क्योंकि ये खुद 150 किलो से अगर 70 किलो हो सकता है तो ये तो हमको कराएगा ही. So I was the walking testimony of my own. I was the walking billboard, right? So, and I'm very humble and I'm very, very grateful. So what happened was Times of India guys reached out to me. They said, we want to do something on you because you have such an amazing transformation. I said yes. So मेरा interview हुआ, and that interview वो publish हुआ. Publish होने के बाद वो सब जगह चला गया. A lot of media agencies then came to me. They also wanted to do the same. Then India Times आया, and one of my article was also one of the Pakistan's leading newspaper also covered my article. वो आज भी ऑनलाइन है. Wow. मेरा नाम, मैं कभी-कभी जाके अपना नाम टाइप करके देखता था 2017 में कि चलो यार थोड़ा लोग जानने लग गए. Wow. How sweet. राइट. सो आई सॉ यार कितने अलग-अलग लैंग्वेजेस में, पंजाबी में है, ये है, वो है, दैट दिस गाय, हाउ दिस गाय लॉस्ट वन so many kilos just by eating cheese. I said cheese is a part of my diet. That's absolutely fine. I just didn't lose weight by eating cheese. I ate a lot of other foods as well with cheese. So this gave me a lot of, my doors got opened and a lot of people started coming to me, and I also did a lot of designer shoots. तो मेरे जब कपड़े 6XL 7XL में मिलते थे, वहां से जब कोई डिजाइनर शूट के लिए मेरे पास आता है, तो मेरे लिए उससे बड़ा हाई क्या ही होगा और जिंदगी में, कि हम तो सब हो गए, अभी Absolutely. मोह माया से दूर हो चुके हैं, अब तो जो मिलना था वो मिल गया. एंड दैट इज व्हेन व्हाइल आई वाज वर्किंग विद फिटर, तो हमारे आईएनएफएस में देयर वाज दिस थिंग, आई वाज बीन कॉल्ड टू, हमारा हेड ऑफिस पुणे में है.
तो व्हेन आई तो मुझे पुणे बुलाया गया था कि वी वांटेड टू चेक देयर इज समथिंग वी आर प्लानिंग आउट. आई सेड ओके. So my article got viral. It got me a lot of work. Other than fitness, it got me a lot of work. Opportunities खुल जाते हैं ना, दरवाजे खुल जाते हैं कि ये कुछ बंदा सब्सटेंस है. He knows about his subject. He has done it. So he can make others transform as well. So INFS में मुझे बुलाया था, तो they took something called as a test of how do you speak. तो एक टॉपिक दिया गया था कि आप उसके ऊपर बात करो. There were around 100 odd people and I got selected for something. I don't know what it was. Then I was being told that you have to go to IIT Madras for 7 days course on teaching nutrition science to the students. Wow. Like मैं तो पागल हो गया था. I got goosebumps. So I said let's do it. क्योंकि देखिए मेरा काम सच्चा है, मुझे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी का 1 रुपया खाया नहीं है. और मैं जब कोच करता हूँ तो मैं पूरा घुस जाता हूँ अंदर. एंड दिस इज समथिंग दैट आई जेन्युइनली लाइक, बिकॉज आई हैव नॉट ओनली स्टडीड न्यूट्रिशन साइंस, मैंने वो किया भी है. So that 7 days of experience at IIT Madras was literally something that I could never forget in my life. Then I was being called to IIT Bombay as well. तो मैं अपने आप को सोच रहा था, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मैंने एडवर्टाइजिंग एंड पीआर किया है. उसके बाद मैंने बहुत सारी पढ़ाई करी है, मैंने फोटोग्राफी करा, मैं पंडित भी हूँ. मुझे तेगनागम महिमान सदंत यत्र पूर्वे साध्या संत देवा, श्लोकास भी आते हैं, सब कुछ पूजा पाठ भी कर लेता हूँ. फॉर मी इट वॉज अ नेक्स्ट लेवल हाई to teach students about nutrition science who are the best brains of India. And I was very privileged, and I was very grateful that, thank you so much for selecting me and making me a part of this. So universe has some bigger plans for you. So coming back to your first question altogether, how were your paths? अनडिस्कवर्ड पास क्या थे जो इंसान ने कभी फैट लॉस का सोचा ही नहीं था, वो कभी सोच ही नहीं सकता कि वो कभी कोच बनेगा और आईआईटी मद्रास जाएगा. सो यू नेवर नो. I can still say that at that point of time I was still figuring it out. And life is all about that. आपको जो मजा आता है ना वो करते रहो, तो आपको ऐसे लगेगा कि आप हर दिन खीर खा रहे हो. And how about meeting Vidyut? Okay, so every time that FITA used to conduct transformation challenges, they used to tell me that you have to host the series, right? So transformation challenge is a challenge being conducted by FITA, जो every 12 weeks में होता है, जहाँ पे you have to showcase your best of the transformation that you can do in the 12 weeks. So let's say if Ramya is starting from point A, she's 60 kilos. Let's say Vivek is starting from 80 kilos, right? So it is not you versus me or me versus Ramya. It is you versus you. If I am starting from this and if this is how I am day 1, this is how I'm going to be at day 90. So the bestest transformations wins. So उसमें अलग अलग categories होते हैं, right? Couple category, single category, senior citizen category. So while hosting one of the transformation challenges, I got an opportunity to speak to Vidyut because I had to interview him, and it was a lengthy Wow. one. So yes, it was a fanboy moment for me as well. So good karma gets you to good places, I believe. So Absolutely. I asked him about Kalari Pattu. I asked him about how does he trains, and he was, mind you, he was around 44, 45 at that point of time, and he still looks like not more than 28 or 29, because these guys Correct. they take care of themselves very well. देखो, आपको दुनिया पैसे दे के देखने आने वाली है, right? So imagine the kind of effort that you're going to put in your own things. And fitness is something जो सिर्फ बोलने से नहीं होता. अगर आज मैं 150 किलो का होता ना, आज आप मुझे बुलाते नहीं, to be very honest, right? So the point what I'm trying to make is I cannot propagate fitness if I'm not fit. At least I should have the expertise, or at least I should have something concrete. So when I was talking to Vidyut, मेरे लिए भी फैन बॉय मूवमेंट ही है. क्या बंदा है यार, इसको टीवी में देखते इसका इंटरव्यू कर रहा हूँ आज, राइट? मैं भी तो इंसान हूँ अंदर से, मुझे भी मजा आता है, मैं भी इन लोग को देख के बड़ा हुआ हूँ. So someone, I asked him one question, like, he told me in the interview, मैंने वो थोड़ा ही छोटा short clip डाला था, but it was a very lengthy interview. I asked him that, you started Kalyari Pattu with a lot of your friends. What about them? He said that मेरे जितने भी cousins थे, मेरे दोस्त थे, उन्होंने आगे continue नहीं किया, लेकिन मुझे इतना मजा आया कि मैंने continue किया. And that sport, you should be having any kind of sport that you play. कोई भी एक sport पकड़ के रखो जो आपको पसंद है. बैडमिंटन हो, रनिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, कबड्डी हो, टेनिस हो, एनीथिंग दैट इग्नाइट्स योर सोल टू गेट अप एवरीथिंग एवरी मॉर्निंग एंड गेट इट डन. वो ऐसा जब बनता है ना, तो आपको लगता नहीं कि काम काम है. लाइक यू गाइस आर अजाइल कोचेस, राइट? आई डोंट नो Yes. एनीथिंग अबाउट इट. तो आई एम लाइक अ नर्सरी स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन इट कम्स टू दैट. तो मैं रात को आके बैठ जाऊंगा, मेरे को सिखाओ रम्या, मेरे को विवेक सिखाओ, ये क्या है यार, मेरे को पूरा सिखाओ, मेरे को पूरा. आई एम अ वेरी, मैं बच्चा हूँ, राइट? बट आपके लिए वो हाथों का काम है.
क्यों? बिकॉज वो आपने इतने साल करके उसको इतने मास्टर बन गए दैट यू रीच द पिनाकल ऑफ दैट. Same thing, something that you do again consistently. You don't need consistency when it comes to agile because वो आपका बाएं हाथ का खेल है. Why? Correct. बिकॉज आपने इतना रगड़ डाला है ना, इतना रगड़ डाला है. मेरी मम्मी की जब शादी होके आई थी घर में, तो वो सिर्फ डब्बा ढूंढती थी. अच्छा, चाय बनाने के लिए, अच्छा ये शक्कर है, ये पत्ती है, ये इलायची है. अभी वो रजनीकांत ऐसे ऐसे देखती है. क्यों? उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना सही हो गया, उसको पता है कौन सा डब्बा किधर है, उसको देखने की भी जरूरत नहीं है. राइट? व्हाट इज इट? इट इज कंसिस्टेंसी. वो इतना कंसिस्टेंटली चाय बना रही है, उसको देखने का जरूरत नहीं है. The same way. So this is what landed me over here, and yes, I interviewed a lot of other people as well. All the other जितने भी हमारे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस होते थे, उसका होस्ट मैं ही रहता था, बिकॉज वो लोग मुझे अपॉर्चुनिटी देते थे. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम एज वेल. So there are so many things, Siddesh, to be honest, you know, with your IIT experience, or maybe with what you discussed about Fitter as well. But obviously, you spoke about how the journey began, or maybe how you are continuing it now. I have a very basic question, which I think a lot of our audiences or listeners would be interested in, is making a career out of this, right? I mean, coaching as a career, especially into this. And I also know that before starting this conversation offline, we were discussing about, fitness coach as a profession is now getting the due, or maybe, people have started recommending it, or people have started acknowledging it. They now understand that there is a profession where a person can get involved or get into it. Would you like to talk about that as well? I mean, for people who would be interested to know about this profession. Absolutely, yes. See, as I said, back in 2016, when I got an opportunity to, once I completed my studies, I got to know that this is how I can also train. Earlier days में क्या होता था? There was only one way of training, and that was training at the gym. We used to go to the gym. The gym trainer used to give us some exercises. Okay, and हम उसको पूछते थे, उनको पूछते थे कि सर हमको क्या खाना है. So they used to tell us, ये खाइए, ये खाइए, ये खाइए, ये खाइए, ये खाइए. That is it. Because I still remember my first day at the gym when he told me, if you weight train, again, no offense to anyone, मैं भी अज्ञानी था, right? We all learn. I still make mistakes, and I should be making mistakes so that I can learn from my experiences. Because मैं perfect नहीं हूँ, मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ जो पानी पे चल सकता है, तो मैं भी इंसान हूँ, हमको भी काटो नहीं है, right? So he told me that if you weight train, you will develop a lot of muscles, and if you develop a lot of muscles, तो fat loss कब होगा तुम्हारा? So you already have a lot of fats. Don't weight train. Just do cardio. This was the advice given to me. Right? That's fine. हमने भी बचपन में बहुत ज्यादा गलत गलत एडवाइसेस दिए थे जब हम नए नए कोचेस थे, बट दैट इज फाइन. वी लर्न फ्रॉम इट. राइट? सो दैट वाज ऑल फिटनेस फॉर मी वाज that if I want to get into it, this is what I need to do. Coaching, training at the gym, and giving people writing diet plans for them. Then 2013, 2014 में आया bodybuilding.com, where I started watching about Chris Gethin. Right? He was the spokesperson for bodybuilding.com. Therein where I understood what are carbohydrates, what are proteins, what are fats. And he was back then a transformation specialist. वो घर पे बैठ के लोगों को ट्रांसफॉर्म करता था. मैंने सोचा यार ये कैसा प्रोफेशन है, घर पे बैठ के लोगों को ट्रांसफॉर्म कोई कैसे कर सकता है? बिकॉज द पॉइंट इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नीडेड फॉर फैट लॉस इज फूड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नीडेड for building muscle is food. The base is food. Then comes the training, right? So once I completed my studies from INFS, I cleared my foundation, I cleared my expert, I cleared my diploma and everything. उसके बाद मुझे समझ आया ये तो बहुत जबरदस्त चीज है. Now that I have the knowledge, I need application. Now that I have the knowledge, I need application. अब मुझे apply करना है. So I started coaching my friends, people around me. Why? Because I'm already fit. इसने तो करके Correct. दिखा. Because till that time, so once I got fit and before I completed my education with regards to nutrition, मुझे पता नहीं था मैंने फैट लॉस कैसे किया. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं लोगों को बोलता था शाम को 8 बजे के बाद ग्रीन टी पी लो, चुपचाप फैट लॉस होगा. तुम छोले भटूरे खा लो, आइसक्रीम खा लो, फालूदा खा लो, रबड़ी फालूदा खा लो, कुछ भी खा लो, 8 बजे डॉट तुमको पीना है ग्रीन टी, सब सब फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा. पता नहीं था, अज्ञानी था. मैं तो वही करता था.
और मेरा तो करते करते हो गया, तो मैंने बोला यही होगा, नहीं, इट डजंट वर्क फॉर ऑल, राइट? सो आई अंडरस्टूड दैट आई नीड सम सब्सटेंस इन मी, दैट मैं जब बात करूं तो लोगों को भरोसा हो कि यार ही इज नॉट जस्ट टॉक्स, ही इज ऑल्सो सम सब्सटेंस, ये काम भी करता है साथ में. So I started training my people around me. I started training my friends. I started training my family, and I started training the people who were very much interested to get coaching from me. And I told them that I'm certified, I'm coach now. So now there are different ways of that. That is when the online fitness business, online fitness thing started booming. This came from the West, right? Fardeen Khan back then used to hire people uh, during his days, and people used to come to his place. They stay. कोचेस रुकते थे उनके घर पे, उनका मील्स करते थे, उसको ट्रेन करते थे उसकी मूवीज के लिए. हम सिर्फ सुनते थे. न्यूट्रिशनिस्ट हायर करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी. बाप रे, Correct. न्यूट्रिशनिस्ट किया है. डाइटिशियन अलग होता है, न्यूट्रिशनिस्ट अलग होता है. न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया है, बॉडी बनाएगा, अरे बाप रे, सिक्स पैक लाएगा, बाइसेप बनाएगा, क्या बात, बहुत बड़ी बात होती थी. बट Correct. I said, let me do it on my own. So I started posting about it on Facebook. मैं Facebook पे अपने transformations post करने लग गया. And I started calling out people that if you want to transform with me, you can just DM me. So that is how I started getting people, right? So उससे हुआ क्या? Over the period of time, my work started getting recognized. And after that, I joined Fitter. So when I joined Fitter, I got into a bigger banner wherein we had to cater to a lot of people. So let's say there are 400, 500 coaches as of now present at Fitter, and there are different category of coaches that you can choose from, right? So now I was available to get coached by or to coach a larger world audience. So that is how I started entering into it, and that was a very new profession. 2017 में 16 में अगर आप मुझे पूछते हैं कि आपका बच्चा क्या करता है, my mother still doesn't know what I do. He's very naive. हाँ, वो कुछ तो फिटनेस का करता है, खुश है, अच्छा है, दैट इज ऑल दैट शी वांट्स. सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज इट्स अ वेरी न्यू थिंग. तो स्टिल पीपल कंसिडर मी, लोगों को लगता है कि मैं जिम ट्रेनर हूँ, और मैं उनको करेक्ट भी नहीं करता हूँ. लाइक जैसे अश्नीर ग्रोवर ने बोला था ना, जब उसने एक ऐप बनाया था, सो पीपल स्टार्टेड टेलिंग मी, ये आपका भारत पे, मतलब ये आपका गवर्नमेंट का ऐप है ना? तो अश्नीर ग्रोवर ने बोला था, हाँ, मैं करेक्ट भी नहीं करता हूँ उनको. हाँ. हाँ. यस, जो आपको सही लगता है वही करिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हेल्थ की जब बारी आती है, ये सबसे बड़ा धन तो यही है. पैसा तो आज जाएगा, कल फिर से कमा लेंगे, लेकिन एक बार हेल्थ ही नहीं है ना. जब मेरा 2 दिन पहले माय आई गॉट अ स्प्रेन ऑन माय शोल्डर, मुझे सिर्फ एक ही चीज करना था. आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ दिस पेन. बुखार आता है तो एक ही चीज याद आता है, यार वो सब ठीक है, ये जल्दी चले जाए तो मैं अपने काम पे लग जाऊं, राइट? सो Correct. व्हेन आई गॉट मैरिड टू माय आई गॉट मैरिड टू माय बेस्ट फ्रेंड. सो जब मेरी शादी हुई थी तो उनके घर वालों ने पूछा था, जिम ट्रेनर है क्या? तो मैंने बोला, करेक्ट भी मत करना, दैट इज फाइन. That's not a problem, right? I'm a part of fitness. I'm going to teach you anatomy. I'm going to teach you. अब बात ये है कि जिम ट्रेनर जो है वो महीने का 2000 भी लेता है, और क्रिस गेतिन जैसा कोच जो है वो ऋतिक रोशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए 12 हफ्ते का 78 lakhs भी लेता है. Yes. So this is the fitness industry, right? So you have to get placed somewhere down the line. कि ये दोनों के बीच में अगर आप कहीं ना कहीं आते हो, you're good in life, right? And I am a risk taker. मैंने तो बोल दिया था ना कि मैं तो ऑलरेडी जीरो पे हूँ. 1 अप्रैल को मैंने अपने आप को बोल दिया था, क्या ही बुरा हो जाएगा इससे ज्यादा. नहीं चला तो पंडिताई कर लूंगा, पूजा पाठ करूंगा, फोटोग्राफी करूंगा, क्या ही बुरा हो जाएगा. लेकिन द यूनिवर्स हैड डिफरेंट प्लान्स फॉर मी, कि नहीं, तू अच्छा आदमी है, सच्चा आदमी है, तू कर लोगों को ट्रांसफॉर्म. एंड दैट इज हाउ आई लैंडेड ओवर हियर. Amazing. So what I want to, I mean, you already asked my question and you partially answered it as well. So see, I have this question. It's like I'm representing the audiences, and that's why I'm asking you. See, once you say that you're a fitness coach, right? You said that you did certification. So I'm assuming that INFS is a certification that aspiring people must be doing Correct. and must do. And second thing is, when you said that ये कैसे job है जो मतलब घर बैठे आप coaching कर रहे हो. So this is from the audience's perspective. I'm checking कि how does your day look like when you say that you're a fitness coach, right? जैसे हमारे इसमें we are into IT, we are like we know that हमारा time उसी पे dedicated है
beyond that, whatever we want to do, just like a podcasting, this is my passion, is why we are doing. Correct. So आपके लिए how does your day look like? मतलब कैसे busy रहते हो? When I say busy, not just to show as a busy, but how is your day occupied in this coaching, fitness coaching? So first of all, thank you so much for this question. I'll answer it in two parts. I'll also answer how a lot of people who are considering fitness as an opportunity, as a profession, how can they, how can they take it forward, and also how my day looks like. How my day looks like. I'll also tell you about that. So the point is, I was also a part of जो institution में मैंने पढ़ाई किया, वही institution का मैं interview panel पे भी चला गया था. So I got an opportunity because I started from a basic coach and I reached up to elite level of fitness. Elite level coach. सिर्फ 4 से 5 लोग थे जब मैं elite level पहुंचा था. एक co-founder थे हमारे साथ और मैं था. So I'm very privileged to and I'm very grateful for the opportunity. So when I used to interview the new people coming in who are passing out the courses, who have plethora of knowledge, there were PhDs, there were doctors, मतलब लोगों को knowledge इतना था ना, इतना था कि मुझे देख के अच्छा लगता था यार क्या कोच बनेगा ये, क्या कोच बनेगा. But the point is, there are two things that I look after. आपको एक PhD की पूरी किताब भी आ सकती है, लेकिन अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो ना, अगर आप बात नहीं कर सकते हो ना, मैं PhD हूँ मान के चलो, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मैं बात ही नहीं कर सकता ना. आपने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, सिद्धेश ये कैसा हुआ, वो ना नहीं चलेगा. It won't work Absolutely. because I see a lot of people, living their careers and leaving their careers and becoming coaches. I don't have any problem. Most welcome. मैं भी यही छतरी का हिस्सा हूँ, मैं भी ये छत्र छाया का हिस्सा हूँ. But the point is, you can have plethora of knowledge. Now, someone who has been working in IT for a very long period of time, जिनको बात करने का आदत नहीं है, जिनको सिर्फ दिमाग चलाने का और हाथ चलाने का आदत है, some introverts, they can have the bestest of knowledge. Obviously, you have degrees under your hand. Okay, आपका MBA हो गया, आपका इंजीनियरिंग का डिग्री हो गया, आपका .NET फ्रेमवर्क का हो गया, हर चीज हो गया. But becoming a fitness coach is a different ball game altogether, boss. Because I am coming to one of the things. So you can have the bestest of knowledge, लेकिन बात करना सबसे important है. How are you going to motivate someone when you are yourself not motivated? The coach का काम सिर्फ डाइट प्लान्स बनाना या ट्रेनिंग प्लान्स बनाना नहीं है, वो तो इंटरनेट पे फ्री में मिलता है. I have to make someone believe in their own self when the entire world is against them, when they themselves are not believing in themselves. जब एक आदमी खुद पे भरोसा नहीं है कि वो कर पाएगा, जब उसको खुद पे भरोसा नहीं है कि वो नैनो ले पाएगा, मैं उसको लैम्बोर्गिनी दिला सकता हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है. सो बहुत सारी चीजें हैं ना, फेस पे दिखती नहीं है. लाइक जब हम किसी का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, आई वर्कड विद मोर देन 3,500 पीपल. लाइक व्हाई डू दे ट्रस्ट मी? आई डोंट नो. शायद से चेहरा अच्छा है, शायद से पुण्य ही है, शायद से ऊपर वाले का पिछले जन्म के कर्म है. बट आई नो, आई टेल देम दैट दिस इज यू ऑन डे 1, दिस इज यू आफ्टर 6 months. लोगों को है ना बीच का मेहनत नहीं दिखता. आज कल को आप बहुत बड़ा घर ले लोगे ना, अरे क्या बात है यार, रम्या और विवेक ने घर लिया यार, क्या बात है यार. बीच का स्ट्रगल किसने देखा? रगड़ के 12-12, 15-15 घंटे काम किया दोनों ने ईटा ईटा बना के पैसे जमा किए, दोनों ने ईटा ईटा बना के इंटरव्यू वाले को बुलाया, दोनों का बैकग्राउंड चेंज किया, ये ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे. लोगों को सिर्फ रिजल्ट दिखता है, लोगों को बीच का स्ट्रगल नहीं दिखता. राइट? सो व्हेन वी सी समवन सक्सेसफुल कोच, क्या बात है, सेल्स को ट्रेन करता है यार. Nobody saw my sleepless nights. I lost my sister to depression in 2019. I lost my father to COVID in 2020. I was completely broken. मैं तो पूरा टूट चुका था. मेरे जैसा इतना मोटिवेटेड आदमी, मैं एक सेल्फ एमिटिंग डायोड हूँ. मुझे खुद को पता है. मेरे भी लो डेज होते हैं, लेकिन मैं कभी चेहरे पे दिखने नहीं देता. मैंने प्रैक्टिस कर लिया और मैं बहुत खुश रहता हूँ. मुझे नींद ही नहीं आती थी. आई यूज्ड टू गो बीच कैंटे में, डॉक्टर के पास गया था मैं. मुझे बोला नींद ही नहीं आ रहा है मुझे, आफ्टर आई लॉस्ट 2 people इन द फैमिली. तो मुझे बोला कि मैं आपको नेचुरलिस्टिक स्लीप के लिए सजेस्ट करूंगा. आई डोंट वांट यू टू गेट ऑन पिल्स. सो आई हैड माय ओन शेयर ऑफ स्ट्रगल्स एज वेल. लेकिन लोगों को क्या दिखता है? नाउ अगेन टू द कोचेस हु आर ट्राइंग टू गेट इनटू इट, यू शुड बी फर्स्ट हैविंग, रगड़ डालो. सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को रात को 3 बजे भी पूछे कि अमाइनो एसिड्स और एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या करता है, मालूम होना चाहिए.
एम्प्टोर सिग्नलिंग पाथवे क्या है मालूम होना चाहिए, हाइपरट्रोफी क्या है मालूम होना चाहिए। लर्न फ्रॉम एवरीवेयर, खान एकेडमी, बुक्स, पीपल, पीयर्स, रिसर्च पेपर्स, पबमेड, सब जगह से रगड़ डालो। फॉलो पीपल हु आर वेरी गुड एट द सब्जेक्ट, फॉलो पीपल हु आर वेरी गुड एट न्यूट्रिशन, फॉलो पीपल हु आर एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल थिंग इन न्यूट्रिशन साइंस एंड ट्रेनिंग साइंस। और जो भी बोल रहे हो ना पूरा सोख लो, एक स्पंज बन जाओ। शाहरुख खान ने एक बात बोली थी, ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्ब एंड डू सो व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो मैं स्पंज हूँ, मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना मैं बच्चा बन जाता हूँ। सीखना है, आज आपसे कुछ सीख के जाऊंगा, रम्या से सीख के जाऊंगा, विवेक से सीख के जाऊंगा। मैं जेन्यूनली ऐसा हूँ, कोई छोटा बच्चा कुछ श्लोक भी सिखाएगा ना मैं सीख लूंगा, क्योंकि मुझे लगेगा यार छोटा बच्चा मेरे से 15 साल छोटा है, उसके मुंह से निकल रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ ये। सो फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्ब एवरीथिंग। दिस इज योर पॉइंट नंबर 1 फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग, हु वांट्स टू बिकम अ कोच, हु वांट्स टू बिकम अ फिटनेस कोच। ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्ब एवरीथिंग। इट इज नॉट ओनली अबाउट वन सर्टिफिकेशन कि आपने सर्टिफिकेशन कर लिया आपको पूरा आ गया। नो, द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग। आज से 10-15 साल पहले पता ही नहीं था कैलोरी डेफिसिट क्या है, फैट लॉस कैसे होता है। आज बहुत कुछ सारी चीजें पता चल गई। 10 साल पहले मैं बोलता था राइस छोड़ दो, ब्रेड छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, जीना छोड़ दो, लेकिन नहीं करना है। सो फर्स्ट थिंग, ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्ब एवरीथिंग which is related to your field. Be the pinnacle of nutrition and be the pinnacle of training. ये दोनों होने के बाद कीप इट असाइड। देन इतना ज्यादा इमोशनली स्टेबल बनो ना कि तुमको कोई भी दुनिया का ताकत हिला ना पाए, बिकॉज यू हैव टू टॉक टू 20 सच पीपल एवरी डे हु डोंट बिलीव इन देमसेल्व्स। करेक्ट। उसको भरोसा ही नहीं है कि 1 किलो भी लूज होगा, उसने किया ही नहीं कभी। उसको होप दिखाना और उससे करके दिखाना। सो 20 लोगों से 10 लोगों से आप बात करोगे ना, इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग यू मेंटली if you don't have a habit of doing it, and a lot of people leave। अरे नहीं भाई अपने लिए नहीं है, अपने लिए तो वही सही था। So you have to stand and you have to deliver, you have to get them out of their pit। It is as good as a therapy कि लोगों को बिलीव कराना, कोई बात नहीं, डाइट नहीं हुआ ना इस हफ्ते, मैं आपके साथ हूँ, वापस से करेंगे, वापस सेटअप करेंगे। और उसके बीच में उसको याद दिलाना उसका गोल क्या है। सो यू हैव टू बी इमोशनली स्टेबल। अब इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं रहेगा तो टूट जाएगा अंदर से, वो थक जाएगा, वो स्ट्रेस्ड हो जाएगा पूरा। सो ईच ऑफ माय कॉल इज नॉट ओनली अबाउट डाइट फॉलो किया, ट्रेनिंग फॉलो किया, नो, आई गो इन डिटेल विद देम कि दिस इज योर गोल। एंड आई ऑलवेज टेल देम वन थिंग, कोई भी बड़े गोल को हासिल करने के लिए आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका वाई डू यू वांट टू डू इट, वाई डू यू वांट टू डू इट, आपका वाई कुछ भी हो सकता है। मुझे गुची खरीदना है, मुझे प्राडा के कपड़ों में आना है, मुझे लैम्बोर्गिनी लेना है, मुझे मुझे लैम्बोर्गिनी का फोटो लेना है, मुझे 10 किलो इसके लिए कम करना है क्योंकि मेरी बहन की शादी आ रही है, मेरी बेटी की शादी आ रही है, मेरे भाई की शादी आ रही है, मुझे बर्थडे के लिए मुझे फोटो शूट कराना है। इफ योर वाई इज नॉट क्लियर, इट इज लाइक एक ऐसे गोल पोस्ट पे गोल मारो जहां पे गोल पोस्ट ही नहीं है। वंस यू फिक्स योर वाई, मुझे इधर जाना है, आई वांट टू लूज 10% ऑफ माय बॉडी फैट, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन यहाँ तक पहुंच के रहूंगा। So first is observe and absorb all the new coaches. Second, nutrition and training science रगड़ डालो। Third, be so emotionally stable. That is when you'll understand balance. नहीं तो दो लोगों से बात करें खुद डिमोटिवेट हो जाओगे तो उसको मोटिवेट क्या करोगे। इट्स नॉट अबाउट True. राइटिंग प्लान्स, उसको साथ में उठाओ। उसको लगना चाहिए कि यार मेरे साथ कोई है। बचपन में डांट कान के नीचे मिलता था, पढ़ाई नहीं करता था तो, ये नहीं करता था तो, सब्जियां नहीं खाता था तो। बड़े होने के बाद मारना छोड़ दिया लोगों ने, तो हम ढीले हो गए। हमको हमेशा एक कोच चाहिए जिंदगी में जो हमको सही रास्ता दिखाए। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी दैट पर्सन। तो आई हैड, मैं अगर मेरे साथ जिंदगी ऐसे नहीं करती ना तो मुझे शायद से सीख नहीं मिलती। इट्स अ पार्ट ऑफ द बिग प्लान। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब ऊपर वाले ने दिया तो छप्पर फाड़ के दिया, और जब लिया तो भी छप्पर फाड़ के लिया, बट नो कंप्लेंट्स। It is only because of that I have turned into a person that I am today. It's only because of my past. वो glorious हो या non glorious हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आज मैं सही हूँ and I am very grateful for everything that I have. So yes, आप मट्टी से भी सोना बना सकते हो अगर आप में वो चाहत है तो करने की। Yes, absolutely. And while जो बात you did mention, right? Uh, Observe, absorb together, and it's not only for
for the fitness or maybe into this. It can be in any aspect of your life. And as you said, ki learning kahi rukna nahi chahiye. You should continuously keep learning, evolving yourself, going back to what has helped you reach till this point is definitely going to help you also move further, but you should not stop the process, right? Absolutely. That is again, wonderfully, you put across in such a wonderful way, and it can be implemented, or it can be taken into any aspect of your life. And we both are into agile coaching. This is what we every time tell, go back to our team saying that this cannot be a single day journey. This cannot be something ki hum log yahan tak aa gaye, we should stop it. It should be a continuous process. The learning has to be continuous thing. Always inspect on the things that you are doing and then see how it can help you move further is what is important, rather than saying that yahan tak aa gaye, that's it. We it should be stopping. So, and also the other aspect that you did mention is having those experiences with your clients who where you have those kind of conversations. Maybe okay, we could not do what we had planned at this point of time, but we'll reassess, we'll do again, and we will restart, or maybe we'll start it again, right? So that is what my next question. Maybe you have answered it in some, in bits and pieces, but how do you ensure to keep your clients motivated every time to continue the journey? Or we understand, while we were talking to you, that you are always motivated. You have that, that energy 100% every time. But how do you ensure that your clients are always motivated in this journey? Sure. So that's a very good question again. So basically, when people, enroll with me, or when they sign up with me, either they reach to me through Instagram, or either they come with, come to me by someone's reference or any WhatsApp, or they have seen my videos or somewhere like that. So once they come to me, or, over the period of time when I send them the consultation form, when they send me back the details and everything, when I go on a call with them, I do a video call basically. So मुझे चेहरा देख के समझ आ जाता है over the period of time. जैसे पता चल जाता है ना कि बच्चे ने होमवर्क किया है कि नहीं किया है, कितना पानी में है। So इतने इतने लोग मैंने देख लिया है ना कि, and when I ask them such questions related to their pains, related to their goals, तो एक अंदाजा आ जाता है, like as a agile coaches, आप 5 मिनट किसी पे फोन पे बात कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है सामने वाला फेक मार रहा है कि सच बोल रहा है। इतना तो Correct. कोई प्रोफेशनल बंदे को समझ आ ही जाता है। सो मैं शाना हूँ थोड़ा, मुझे अच्छे से समझ आ जाता है। बट अगेन, so I tell them, I ask them their goals, and I tell them that there is something called as realistic goals. Okay, you cannot lose 15 kilos, someone who is a 60 kilo person or a 70, 80 kilo person in 3 months or 2 days or a month. Because अगर आपने 15 किलो गेन नहीं किया है तो 3 महीने में आपको 15 किलो आप लूज भी नहीं कर सकते until and unless you are someone who is a morbidly obese person. So first question, how do I keep them motivated? See, motivation is something that obviously it is very much required, and that is why people come to me. Now I have a protocol. Okay, I tell them don't rely on motivation. Okay, because motivation आपको हर दिन चाहिए होगा। फिर जिस दिन मोटिवेशन नहीं रहेगा ना, उस दिन आप कुछ करोगे नहीं। मन है ना, मन चंचल है, वेदों में भी बोला गया है, मन चंचल है। अरे छोड़ यार, आज नहीं जाता हूँ यार जिम, चल जाने देना। अरे छोड़ना, आज वो दही पूरी खा लेता हूँ यार, बहुत मजा आ रहा है, चलना आज जाके रबड़ी फालूदा मार लेता हूँ। मन चंचल है। But you should, as I said, first thing is you should always have a clear why. That when it comes to fitness, और मेरे पास जो आते हैं वो सीरियस लोग ही आते हैं, and even if they are not serious, I make them serious about their life or something or the other. अगर आप मेरे पास आए हो तो मैं कुछ ना कुछ करके ही भेजूंगा आपको वापस, right? So first thing is I teach them that motivation is important in life, but to do things, right? And every human cannot, आप हर दिन सुबह उठ के motivated नहीं रहते हो. No human can be motivated 365 days a year. And I am also not going to say that discipline is everything. You have to be disciplined. I'll say only one thing, and that is commitment. Be committed, right? What is that thing which is making you log in for work every morning? It is not motivation. आप अपने जिंदगी का 12 घंटा एक कंपनी को दे रहे हो, जब आप कभी भी रिप्लेस हो सकते हो, राइट? वो क्या मोटिवेशन है? क्यों है? क्योंकि वो काम से पैसे आ रहे हैं, वो पैसों से सपने पूरे हो रहे हैं, घर चल रहा है, एंड्स मीट हो रहा है। हमारा लाइफ स्पैन शॉर्ट है, 70-80 साल, 100 साल जिएंगे। जापान वालों का थोड़ा ज्यादा है हमसे। तो ये जब तक है, बुढ़ापे में किसी से पैसा मांगने की जरूरत ना पड़े, वी हैव टू लिव अ वेरी गुड लाइफ, right? That is why out of a 24-hour window, you're sleeping for 6-7 hours, and the rest 8 to 10 to 12 hours you are giving for a company. What is the motivation? That is commitment.
Be committed to your things. I am committed to Committed my to goal. कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं अपनी बीवी के कमिटमेंट में हूँ कि भाई जिंदगी भर का 7 फेरे लिए हैं तेरे साथ, 7 फेरे जिंदगी भर निभाऊंगा. कमिटमेंट है. फिटनेस इजी है, हमने इसको डिफिकल्ट कर दिया. सी न्यूट्रिशन साइंस, ट्रेनिंग साइंस इज वेरी इजी. आई ऑलवेज से पीपल आर डिफिकल्ट, राइट? सो आई टेल देम बी कमिटेड. व्हाट इज द कमिटमेंट? मिनिमल कमिटमेंट. 3 दिन जिम जाएगा सर, 3 दिन तो इजी है बस. वंस यू स्टार्ट विद समथिंग इट गेट्स हैबिचुएटेड. 3 दिन जिम जाओ, बाकी के 3 दिन बाहर वॉक करो. इज इट डुएबल? आई आस्क देम. हाँ, इतना डुएबल है सर. एंड एवरी वीक आई हैव अ कॉल विद देम wherein I grind them, I motivate them, I tell them stories, I tell them what they need to do at this point of time to be where they want to be. So that is called hand holding. डाइट प्लान, ट्रेनिंग प्लान फ्री में मिलता है, मेरी क्या जरूरत है? ऐप बना के दे देता है कितना सारा. But what is important is making them adhere to that plan by setting it up in their own routine. That is the work of a coach. You handhold them, you make it happen for them. You make in believe. उनको खुद के सपनों पे उनको भरोसा करवाना एक कोच का काम है. And every month I take a session for them. This is something that I do only for my students. One monthly session every month wherein मैं दूसरे अवतार में रहता हूँ पूरा. इससे 10 times high रहता हूँ मैं. I talk about mental aspects of it. I talk about Ashtavakra Gita. I talk about how you need to prepare your brain for the big things in life. I talk about hypertrophy. I talk about each and every topic that I feel which is right for my students, so that till the time that they are with me, they should get 1,000 times more value than what they came for. मेरे पास लाइट है, सूर्य देव बीच के प्लानिट होते हैं नवग्रहों में, सबको लाइट दे रहे हैं. सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नम कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा. तो हमारे में एक, हम भी तो ऊपर वाले के अंश हैं. हम लल्लू वल्लू थोड़ी है. हम भी अपना नॉलेज दे अपने बच्चों. That is how I keep them motivated. I teach them reality. I teach them that बेटा करना तुमको ही है. मैं तुम्हारे साथ खड़े रहूंगा श्री कृष्ण की तरह. मैं रथ चलाऊंगा, बाण तुम चलाओ. ऊपर हनुमान जी बैठे हैं ध्वज पे, वो संभाल लेंगे बाकी का गेम. So that is that amalgamation that I have with my students. मैं उनके दिमाग में घुस जाता हूँ because मेरे लिए मेरा हर एक बच्चा important है. And I am just not saying this on this podcast. I genuinely feel, क्योंकि I work for that trust. अगर इतने सारे दुनिया में कोचेस में से अगर मेरा बच्चा मुझे चुनता है कि मैं काम करूंगा तो सिद्धेश सर के साथ करूंगा, तो उससे बड़ी जीत मेरे लिए कुछ नहीं है कि मैंने कुछ ना कुछ तो पुण्य किया है. मेरे पूर्वजों की पुण्याई है कि मेरे पास लोग आ रहे हैं. एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग, दैट इज द बिगेस्ट हाई दैट आई हैव. और एक बार वो आ गया, यू गेट द बेस्टेस्ट ट्रीटमेंट दैट ही हैज एवर रिसीव्ड इन लाइफ. को प्यार भी करूंगा, डांटूंगा, चिल्लाऊंगा भी, लेकिन उसको गोल्स भी मीट करा के रहूंगा. दैट इज व्हाट आई डू. Wow, amazing. And this is exactly same reason why we wanted to do this podcast. And we have already blown the time box to the next level. So we don't want to hold you long back. We literally had so many other questions, but maybe we will do it as a separate podcast altogether, but not today because we literally have blown the time box and we being coaches ourselves. This is the first thing that we teach our teens or maybe students is that you should not go beyond the time boxing, and we have crossed our limits today. So thank you so much, Siddesh, for coming over. I am literally pumped up, and it's like I'm not sure what I'll turn out to be tomorrow, but at this point I'm really motivated and pumped up. I literally watch every single video that you put on Instagram. I know that it takes a lot of efforts in getting that game also right, and literally it was kind of a masterclass in itself. So thank you so much for coming over and doing this podcast with us. We really enjoyed it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for inviting me over, and thank you so much for having, such a warm welcome. And yes, I'm really feeling very elated, very humbled, and wish to do more podcasts with you in the future as well. Thank you, Siddesh. Thank you so much. Thank you so much for watching the episode patiently till the end. We hope you enjoyed the episode. We'll meet you again in the next episode. Till then, if you like our podcast show, then please do like, share, subscribe, and let us know your feedback in the comment section.